alaikum everyone. My name is Mariam. Welcome to today's session of On Air with Boss. Today we have Shahryar with us. Shahryar Sajid Khan is a distinguished finance professional with a strong track record in investment analysis and financial advisory. He previously served as a financial analyst at Onshore Advisors in Bahrain and was instrumental in providing strategic insights and financial solutions in the Middle East for 3 years. A silver medalist in MBA from the Lahore School of Economics, Shahriyar's academic excellence is complemented by his exceptional early career achievements. He was among the only 3 candidates selected from Pakistan for the prestigious management trainee program at Fauji Foods, a testament to his analytical acumen and leadership potential. He was then promoted to production planner. An alumnus of Beacon House Defence Campus Lahore, Shahriyar continues to build on his strong foundation, bringing expertise, dedication, and a results-driven approach to the financial sector. Let's take a trip down memory lane. Can you tell us about your journey at Beacon House? So along the scholastic journey of my life, I've been very fortunate enough to be a part of Beacon House. I started my schooling back in 2001, I guess, and I enrolled in 17G Beacon House, which is situated in Malltown Link Road branch. So I moved my way across that till class 5. I was in that school. Then we shifted into 79G Beacon House. Then my journey was from 6th class onwards. It was in 45-1B1, which is the Model Town Boys branch, and I excelled my way towards the O levels there, and I was the head boy. So that is a complete overview. Okay, and do you remember any of your school teachers? Yes, surprisingly, I remember all of them because Okay. I've had a very good cordial relationship with all of them. And I remember we used to have Ma'am Sabahat, who was the headmistress. So we had a very good working relationship with them because I was the head boy. So I was closely in contact with the headmistress. So tell me, Sharar, if you were supposed to classify yourself, would that be a nerd? Would that be somebody naughty, notorious? It's a funny story because I would classify myself as someone who is in between all of them. In some classes I was a nerd. In some classes I was a teacher's pet even, but in most of the classes I was a backbencher. Okay. So it was a mix of both worlds. So that is how I would classify myself. So how did you decide where you were going to be a backbencher and where you were going to be the teacher's pet? In the subjects which I was very good at, for example maths and stuff, I did not used to care a lot. So I was mostly a backbencher then because I knew I would always catch up even if I did not pay attention. So that is how I went through my subjects in class. Okay, so Sharar, if you were to name one thing from campus after you, what would that be and why? BDC में recently swimming pool installed हुआ. So it wasn't the case when I was back there. So along when I was growing up, I was actually bulky. I had these genes के जहाँ मैं पानी भी पीता था तो लग जाया करता था. So इस तरह के बच्चे are not blessed enough with a good metabolism. So हमें कोई ना कोई exercise लेनी पड़ती थी. I used to join gym and stuff. तो swimming recommend की थी मेरे दोस्तों ने क्योंकि they were the ones who were doing it. So उन्होंने जब ये recommend किया तो I started doing it as a form of exercise. But when I actually dug deep into the water, so वहाँ पे वो it actually started growing. I started growing fond of it. So काफ़ी enjoy करना शुरू किया and I took it up and I lost quite a few pounds. तो फिर वो repetitive exercise बन गई थी कि 6 महीने खाना, 6 महीने फिर उसको burn करना. So every year I go through the same phase. So Sharar, if your campus life was a movie, what would the title be and why? The movie that instantly comes to my mind is Tare Zameen Par because there were all kinds of people there which we used to believe in ourselves and we used to call each other stars. And the places that we all are in, Alhamdulillah, so wo cheese is resonating with there as well. But uske alawa, it has a very common ground as well. जो लोग अगर देखेंगे हमारे स्कूल वाले, they will understand that there were many Ishan Awasthis as well. So उनको भी साथ लेके चलना, that was very important for us as well. तो हम उन्हें भी साथ लेके चलते थे और that's all. Beautiful thing that you have spoken about. It's extremely important to be inclusive, and at times those principles are given to us by our family, but most of the times because we spend a lot of time in school, आपको स्कूल भी ये सारी वैल्यूज़ देता है. सो आप मुझे बताओ कि आप का ये जो पूरा माइंडसेट था, द काइंड ऑफ वैल्यूज़ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट,
Do you think the school and your campus helped you with that? I think it was a mix of both. Parents, we obviously they played a part in it as well, but school was very inclusive as well. Acha Shaira, tell me, if your library had a secret floor, what would you find on that floor and why? If my library had a secret floor, it would have all the books that I've written. So this is something that I have a Okay. few e-novels floating on the website as well, which I've written. I have ghost articles as well. मैं anonymous रखता हूँ उन्हें because that is something that is very close to my heart. I am the sort of person who would want to write something कि जो कोई predict ना कर सके. अब मैं कोई movie देख रहा होता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं उसका पता चल जाता है कि अच्छा यार ये हो जाएगा, even if it's a mystery or a thriller. So I want to always write something कि जो कोई predict ना कर सके. So that is something which my secret floor would have with all the kind of writing जो मैं खुद लिखता हूँ, where nobody can predict or cliffhangers. What inspired your journey to write? I think I found solace in it because it was a kind of a leisure activity for me because there are sort of people जो कि find solace in writing stuff, कुछ gaming की तरफ जाते हैं. So I was an all-rounder because मैं gaming भी करता था, मैं writing भी करता था, and writing is something that really gives me a sense of accomplishment. क्योंकि जब आप कुछ लिख लेते हो, and that is something which I used to float it to all my friends, and I used to write chapters जो कि weekly मैं तब Netflix के दौर से पहले भी मैं खुद किया करता था कि मैं weekly एक भेजता था, तो क्लिफ हैंगर छोड़ा हुआ, तो they were eager कि अच्छा अगले हफ्ते क्या होगा, तो वो that is something that I initiated on my own, and it was a very good thing to continue. If you could travel back in time, if you had a time machine somehow, what would you do differently? एक ही चीज़ है जो I would do differently कि प्रेजेंट में रह के उसको enjoy करना, जो कि उस टाइम में बहुत ज़रूरी था. हमें सब ये होता था कि यार जल्दी बड़े हो, फलां कोई जॉब लगे, ये हो वो, ये टाइम हम उसे बुरा समझा करते थे. हालांकि आई थिंक इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स. आई वुड हैव प्लेड मोर, एंजॉयड मोर विद फ्रेंड्स, क्योंकि अब जब आप उस बाउंड्री के बाहर आप आते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, लेकिन वो जो टाइम होता है ना विद दैट फ्रेंड्स, वो जो बाउंडेड टाइम है, Yeah. वो दोबारा मिलना बड़ा मुश्किल होता है. So, are you in touch with your friends from that time? Yes, we have a lot of WhatsApp groups, specifically उसी वाले नाम हैं हमारे, जो nicknames तब चला करते थे, अभी तक हमारे वही है. तो we meet once a month at least. We try to do more often, लेकिन वो अक्सर हो नहीं पाता busy schedules की वजह से. So, who was your best friend at that time? ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लोग कहते हैं कि एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है. आई डोंट बिलीव इन दैट. मेरे काफी सारे बेस्ट फ्रेंड है और हर एक के साथ डिफरेंट डायनामिक होता है. Okay, So mashallah. शहाब, जुनेद, वलीद, हमजा, ये सारे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स, एंड अभी भी हैं ऐसे ही हैं क्योंकि we've carried that bond throughout the year. So, Sharar, if your campus was a zodiac sign, what would the sign be and why? It was an all boys school, so I'll think Leo, because there was a lot of stuff happening all the time. तो जब मैं हेड बॉय भी था तो इतने chaos हो रहे होते थे हर वक्त, कभी प्लेग्राउंड में, कभी कैंटीन में, कभी क्लासेस में. तो आई वाज मतलब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल रही होती थी और सारे केसेस भी हम देख रहे होते थे. सो आई थिंक लियो परफेक्टली डिपिक्ट्स इट. Any interesting case that you would like to mention over here? The only instance that comes to my mind is कि एक दिन था जब मेरी पूरी काउंसिल was expelled for a day. Really? Why? क्योंकि वो मेरा नाम लेके वो सारे क्लास से बाहर निकले हुए थे. हमारी उर्दू की टीचर होती थी मिस नसरीन, उन्होंने होमवर्क असाइन किया हुआ था. वो काफ़ी हमेशा ज़्यादा होमवर्क दिया करती थी, तो ये सारे मेरा नाम लेके, क्योंकि बीकन हाउस मेंटल मैथ्स ओलंपियाड आ रहा था, तो मैं उसके लिए एक्चुअली काम करने के लिए निकला हुआ था. तो वो हमारे पास तो होता था कि यार जब बिल्कुल डेडलाइन आ रही है तो हम यूज्ड टू हैव दैट लिबर्टी एज अ हेड. Okay. सो बट जो मेरी काउंसिल थी, उन्होंने सारों ने कहा कि हमने भी काम करना है. तो मुझे भी इवन पता नहीं था. तो जब मैं वापस आया क्लास में तो मैंने देखा कि सारे लाइन बना के बाहर खड़े किए हुए हेड मिस्ट्रेस ने. तो उन्होंने मुझसे भी इंटेरोगेशन हुई कि अच्छा कि सारे तुम्हारे साथ थे ये वो. तो मुझे तो पता नहीं था कि मेरे साथ थी अपेरेंटली, वरना मैं कवर भी शायद कर लेता. लेकिन उन्होंने एक दिन के लिए सबसे बैजेस और सैशेस सब ले लिया गया था. तो एक दिन के लिए वो फिर पूरे स्कूल में पता चल गया था. तो सारे बच्चे 6 और 7 क्लास वाले बच्चे 11th क्लास वालों का मजाक उड़ा रहे थे मेरी सारी काउंसिल का कि एक दिन के लिए सबसे बैजेस लिए गए. What is one thing that you have learned from Beacon House that still resonates with you? आई थिंक दो चीज़ें हैं which still resonate with me. वो ये है कि गिविंग योर बेस्ट वाला ऑलवेज, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर हुआ करती थी मिस साइमा. शी यूज्ड टू टीच अस कि आप ऑस्ट्रेलियंस को देखो, वो माइंडसेट उनका क्या होता है कि चाहे वो हार भी रहे हो, लास्ट बॉल तक दे फाइट. सो गिव योर बेस्ट ऑलवेज. और दूसरी ये चीज़ है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाले. हमारे आई रिमेंबर विविडली के शौकत खानम की वो टिकट्स आया करती थी कि बिल्ड अ ब्रिक फॉर द कैंसर पेशेंट्स. सो वी यूज्ड टू हैव दैट फ्रेंडली कंपटीशन कि हमें से वो रूट में ही हमें सिखाया गया था कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एज वेल. तो हमें वो सिखाया गया था कि जब बड़े होने ब्लड डोनर बनना है आप लोगों ने इसी तरह कॉजेज के लिए काम करना है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट
was really resonating with us. So basically, mentorship was an active engagement or an active policy at Beacon House. Are you in touch with any of your mentors? Via Facebook, yes. I don't have their contacts, but we do share often messages आ जाते हैं उनके और ये पता चल जाता है कि अच्छा where they are in life and currently some of them are abroad and some of them are still in Pakistan. And जब भी मुझे कभी टाइम मिलता है मैं Beacon House Mall Town में visit करता हूँ and that is how we interact. So Sharar, can you tell me about any memorable class or a memorable professor that you had? I think I was blessed with people जो कि काफ़ी memorable थे in their very own way क्योंकि हमारी उर्दू टीचर she used to be very strict और वो हमारे साथ इतनी सख्त हुआ करती थी कि हमें ख्वाब भी उनके आया करते थे कि रातों के वक्त कि वो अभी भी हम कभी दोस्त बैठे होते तो हम याद करते उन्हें. एंड उसके अलावा हमारे मैथ्स टीचर ही वाज वेरी फनी एंड बायोलॉजी टीचर अब उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि वो हमें भी पढ़ाया करते थे और वो साथ हमारा गर्ल्स ब्रांच था वहाँ भी पढ़ाया करते थे. तो ही वाज सम वॉट ऑफ अ मीडिएटर हमारे दिमाग में. वो बताते थे कि ये चैप्टर पढ़ते हुए उन्होंने क्या रिएक्शंस दिए थे, हमने क्या रिएक्शन दिए. So do you remember their names? Would you like to give them a shout out and maybe we can see if we can have them get in touch with you? Our Urdu teacher was Miss Nasreen, maths teacher Sir Majid थे और biology Sir Amir Raza पढ़ाई थी और Sir Amir Raza तो अभी Beacon House Mall Town में है. So I think students are very lucky to have him as a biology teacher. Miss Nasreen, if you're watching this, please get in touch with Sharar. And he and his friends would definitely like to meet up with you. So Sharar, do you remember any canteen snack that you used to have back in school? हमारे कैंटीन वाले अक्सर वो चाइनीज एक ना कार्ट लेके आया करते थे, हर ट्यूसडे को आया करता था. वी यूज्ड टू 30 रुपीज़ की प्लेट हुआ करती थी, आई स्टिल रिमेंबर इट, और 10 रुपये का रीफिल हुआ करता था. तो हमारा एक दोस्त 30 रुपीज़ की वो प्लेट लिया करता था, बाकी हम वो जब वो खा लेते तो हम 10-10 रुपये की रीफिल्स करवा के आया करते थे. So how did you decide कि कौन सा फ्रेंड 30 रुपीज़ लेके आएगा और बाकी कौन से फ्रेंड्स 10 रुपीज़ लेंगे? और हम लोग लंच घर से लेके आया करते थे, कभी नगेट्स होते थे, कभी कुछ होते थे. ही वाज द वन जो रोज बाहर से लेके आया करता था. तो दैट वाज अ प्रिविलेज बैक देन कि वो हर रोज पेप्सी और लेज और इस तरह की चीजें लाया करता था. तो ही वाज ऑलवेज समवन हु हैड के अच्छा बहुत पैसे हैं, कोई मसला नहीं. तो ही वाज द वन ऑलवेज स्पेंडिंग 30 और हम लोग होते थे 10 वाले. Would you like to give a shout out to him? फरहान, इफ यू वाचिंग, we all know कि हम तुम्हारी बात कर रहे हैं. Acha Sharar, tell me, did you have a go-to study buddy or were you a loner as far as studying was concerned? हमारी क्लास में फन फैक्ट वाज कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स वर पढ़ाकू. तो Okay. जो 10-20% थे बाकी हमसे थोड़ा तंग हुआ करते थे क्योंकि अब मेरी कॉपीज लेके भाग जाया करता था मेरा एक दोस्त शहाब. तो वो अभी तक हम मजाक उड़ाते हैं कि वो कहता था कि मैं असाइनमेंट या वो कॉपी करके या सब कुछ मैं अगले दिन ले आया करूँगा. तो वो खुद छुट्टी कर दिया करता था 3-4 दिन. तो मेरे आई यूज्ड टू हैव अ हार्ड टाइम उस तरह. एंड एज फार स्टडी बडी इज कंसर्न्ड वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर. तो शहाब होता था, जुनेद होता था, एंड कोई भी किसी में कोई हंसता था किसी चीज़ में तो वी यूज्ड टू हेल्प ईच अदर. So that's really nice because normally every time you would ask girls during exams or before them, have you studied? They would all be like, no, we haven't studied. हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें तो कुछ नहीं आता. And then they would always end up getting the highest scores in class. I hope you weren't that kind of a boy in school. नहीं, we were very apparent. हमें दूसरे को पता होता था कि अच्छा इसमें ये चीज़ वीक है, इसको इतनी तैयारी करके आया होगा. वो हमने तो इवन कुछ चीज़ें छोड़ी होती थी उस पर कि अच्छा वो तैयार कर रहा होगा तो हम उससे ही सीख लेंगे. Sharar, would you like to give a message to the current students of Beacon House? Believe in yourself and just keep on doing the right things at the right time. और बाकी आप मेहनत करो, कभी ज़ाया नहीं होती. Thank you so much, Sharar, for joining us today. It was an absolute honor to have you on air with Boss. Thank you so much. Thank you so much for having me. It was a privilege to give back to the Beacon House Society and I really had a lot of fun. Beacon House Old Student Society, POS, building a community together.